guys, good morning. What's up and what's new? Today is a brand new day. This is the part 3 of our trip. Today we are going to leave from Misty Meadows Homestay and go to another place. As I told you, we are going to Lepchajagat today. We are staying over there and then tomorrow we'll leave for Siliguri. If you're coming to Kalimpong, you don't want to stay in the main town area like Kalimpong main town because it's too damn crowded. There's cars parked everywhere. When you're coming to take a trip like this family staycation type trips, you would want to be relaxing and enjoying the nature for the while you're here. All the details that about Misty Meadows, where it is located. It's located in Fikkalay Gaon, 12 kilometers from the Kalimpong main town area. All the information about the homestay, about the local sightseeing of the place, I have given already in my videos. I'll also mention it down in my description. Please do check it. I'll give the contact numbers of the car you can hire to go for local sightseeing. Yes, we'll go today. We'll see what happens in Lepchajagat. We might hit 2-3 sightseeing spots while we go to Lepchajagat. But let's see. Let's continue. I love this place, man. I love this place. गाइस हम लोग अभी आए हैं फर्स्ट स्टॉप फॉर टुडे जो है लवर्स मीट व्यू पॉइंट, जो पेशोक टी गार्डन के पहले आता है। तो हम लोग वहाँ आए हैं। वहाँ पे आप नदी का मीटिंग पॉइंट देख सकते हो। एक है रंगीत जो सिक्किम के साइड से आ रहा है और एक है तीस्ता जो दार्जिलिंग कालिम्पोंग इस साइड में है। तो उन दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे दिखता है, जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। वो नदी दिखता है और यहाँ पे बहुत खाने का स्टॉल है जहाँ पे मिक्स फ्रूट, मोमोज, चॉकलेट्स, कैंडीज़, बहुत कुछ मिलता है। आप लोग वो ट्राई कर सकते हो और यहाँ पे बस चिल करो थोड़ा, फिर नेक्स्ट स्पॉट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए। सो गाइज, सेकंड स्पॉट आज के लिए आफ्टर लवर्स मीट व्यू पॉइंट आप आ सकते हो। वहाँ से ही थोड़ा दूर चल के गाड़ी में ही आपको दिखेगा पेशोक टी गार्डन। पेशोक टी गार्डन के पास दुकान है जहाँ से आप चाय पी सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो। यहाँ पे खड़े होके थोड़ा अच्छा व्यू है आसपास। यहाँ से आपके कंचनजंगा का जो रेंज है वो भी दिखता है, वो भी विजिबल है। अगर क्लियर स्काईज हो तो वो भी देख पाओगे आप लोग। अभी तो है फ़िलहाल क्लियर स्काई। और पास में पूरा पेशोक का टी गार्डन है, वहाँ पे आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो। पूरा टाइम एंजॉय करो, यहाँ पे रिलैक्स करो, चाय पियो, चाय इज़ लाइफ। एंड देन फिर से हम लोग चलेंगे। So guys, right now we are in the third spot, which is Lamahatta Park. This is Lamahatta Park, totally a pine forest, and there is a lake on top of it at the most top. So we'll go there. Let's see Lamahatta Park in 3, 2, 1. Guys, this is way up. You have to climb up paved pathway for around 25 to 30 minutes. Then you'll reach the Lamahatta top, where the
lake or the sacred water body is located. देख रहे हो आप कैसे सांस फूल जा रहा है. But yes, this is it. We have reached here. हाय गाइस, सो हम लोग आज पहुंच गए हैं लेप्चाजागत में ममता होम स्टे. और यहाँ हम लोग ने चेक इन कर लिया, बैग रख दिया. अभी हम लोग लंच करेंगे. लंच करके इधर ही थोड़ा वॉकिंग स्टेप बाय स्टेप कहीं जाएंगे. देखते हैं, आप लोग को दिखाएंगे. बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, ठंड भी है यहाँ पे ज़्यादा. लेट्स गो, लेट्स सी. तो गाइस हम लोग ने लंच कर लिया. लंच के बाद अभी थोड़ा रेस्ट लेके बज रहा है 4:16 PM. अभी हम लोग हैं यहाँ पे लेप्चाजागत के एरिया में, थोड़ा घूम रहे हैं. सामने ही है लेप्चाजागत का फेमस पाइन फॉरेस्ट. अभी तो पूरा वेदर बहुत ख़राब है, पूरा फॉग हो रखा है पीछे. बट कल सुबह शायद से थोड़ा ओपन हो तब हम लोग जाएंगे. बट अभी देखते हैं, जाते हैं उस व्यू पॉइंट की तरफ, सनसेट व्यू पॉइंट की तरफ. वहाँ से देखेंगे अगर सनसेट दिखा तो. सनसेट होने में अभी भी 1 घंटा है, 1 घंटा के करीब. देखते हैं क्या होता है. तो गाइस, इनके लिए और हम लोग सब के लिए आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, ठीक है. बाय बाय. बोलो अब. इन माई बोल दिए. So that's all for this video. Please do like, share and subscribe and to comment, this channel. Please do that. So yes, this was it for this video. Please, if you like this video, do give it a like. Comment what you felt and how was the video. Also share this with other people. And for final thing, subscribe and don't forget to hit the bell notification icon so you can get the current updates. Let's peace out for this video. Goodbye.